अस्सलाम वालेकुम जी। jurist.pk के साथ मैं हूं मोहम्मद हंसला ज़मीर। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से है। आज के टॉपिक में हम जो एक वकील है उसकी बुनियादी तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द क्लाइंट और टुवर्ड्स दैट ऑल रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, उस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे अपने इंतहाई काबिल एहतराम वजाद फैज़ान साहब। वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और माशाल्लाह इनकी जिनका इंट्रोडक्शन है उसकी माशाल्लाह इतनी लंबी तवील फहरिस्त है कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद आधा सेशन उसी में गुजर जाए, लेकिन फिर भी मिस्टर वजाद फैज़ान is a juris doctor. He's an internationally trained attorney, an advocate of high courts of Pakistan, and a regulated immigration consultant. He has over 10 years of working experience in the field of law in different jurisdictions, Pakistan, Canada, United States, and United Kingdom. Currently, he is working as managing consultant for Prism Immigration Services Canada. So thank you very much, Vijay sir, for giving us your precious time. Thank you so much for having another session, Hansla, and inviting me. It's my privilege and honor. Thank you. Thank you. और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उसामा जमील साहब और हसन दाऊद, मेरे साथ इस सेशन की होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हसन। थैंक यू। अच्छा वजाद साहब, टॉपिक है हमारा 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉयर। सो ओवर टू यू सर। Thank you, Hansla. I think today we are discussing one of the most important and straining nerves of our legal profession. How should we be looking at a lawyer's responsibility throughout his professional career, and because हमारे मुल्क के अंदर और generally दुनिया भर में वकालत एक ऐसा profession है कि जो आप उसमें isolate नहीं कर सकते between a professional hat and a personal hat. And this particular profession, this particular pedestal of legal, the community plays very important role in development of the society. और पास्ट में अगर हम माजी करीब में और माजी बईद में झांकें तो we can see a lot of examples जिसमें हमें पता लग जाएगा कि lawyers ने क्या रोल प्ले किया है सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए। बजाय उसके के बाद में आके उसके बहुत सारे मुहर्रिकात सामने इंसान के आते हैं and things are not exactly how they pan out, but it is one of the mechanisms by which societies develop. So मेरे हिसाब से मेरी अपनी नाक़िद राय के अंदर 5-6 की ingredients हैं lawyer के in order for him to be at a level where society takes honor and pride of them contributing towards the development of the society. So we'll start with the 5 key concepts that I have encapsulated. This is based on my overall experience in the legal industry for the last 10 years. What I have gathered कि एक lawyer की जो 5 basic responsibilities हैं वो क्या होनी चाहिए towards the profession. Because when we start off our careers, we must assume the responsibility of being a professional first, and then we should look at how we are contributing to the community and the society. So the first 5 elements which I think are most important to define professional responsibility are professionalism, competence and confidentiality, conflicts of interests, advancement of legal profession, and then finally we will discuss about harassment and discrimination. Because that is the burning issue of the global, work environment or social environment right now. How you, pan out that particular aspect of harassment and discrimination. So to start off, what I define as professionalism, or what I define as the first ingredient, is professionalism, where I believe that a lawyer must always act with integrity at all times. And when I say integrity, it has 3 concepts, which is to act with civility, be courteous to everyone you communicate to, and act in good faith in the interest of your client. So in तीनों को let's discuss this. So the idea of this particular discussion is that I'll give out my points and then you can cross it out or communicate with me with your questions or your particular experience ताकि हम उसको
एक तरह से रिफ्लेक्टिव एनालिसिस कर सकें उस पर। सो महज़ब माशरों के अंदर जहाँ पे आप अगर आप देखते हैं, आपने पढ़ा भी है और आप जानते हैं कि lawyers stand at a specific pedestal above everyone else in the society. Lawyers are at the top of the line in terms of how societies are shaped, because lawyers play a very important role becoming legislators, going towards the justice system, provision of legal services. So और खास तौर पे हमारे माशरे के अंदर जहाँ वकालत को इस तनाजुर में देखा जाता है कि it is kind of a privileged status, तो वहाँ इन तीन एलिमेंट्स का जो कि कंबाइन करके इंटेग्रिटी फॉर्म करती है एक इंडिविजुअल की। हाउ विल आई बिहेव, हाउ विल आई बी कंसिडर्ड अ पर्सन विद इंटेग्रिटी is when I believe I have all these 3-4 ingredients and I am able to root it up with particular practice and हम उसको elevate कर सकते हैं अपने status को society के अंदर। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि civility is the key element. You behave, you reflect your personal experiences and how you handle your overall environment as a professional, that formulates your integrity, your personal integrity and your professional integrity. So at all times, a lawyer should have integrity and should have civility as part of his professional and personal environment and personal attitude in giving out services or in delivering the duties whatever he's been assigned, as a prosecutor, as a defense counsel, as a fact-finding counsel, as an investigator, as a judge, as a legislator, or as a head of any department or institution where he is setting up. Courteous होना हमारे माशरे के अंदर थोड़ा सा इसको टैबू समझा जाता है, because I think वो it comes from the overall environment जहाँ पे because हम एक adversarial system के अंदर, Pakistan is an adversarial system where you take sides, either your defense counsel or your prosecution. So आप वहाँ एक litigation fight, एक fighting match ही conduct होता है court के अंदर and out of court as well, where you believe that you are the defender of the rights of your client, right? तो वहाँ पे I believe लॉयर के ऊपर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज पहली चीज ये है कि यू हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, you have a duty to uphold the integrity of yourself and your profession by your actions. So yes, defend your counsel, defend your client, be a counsel for your client, but behave with certain baseline elements जिसके अंदर आपकी courteousness, आपकी politeness और आपकी जो ओवरऑल सिविलिटी का एक एलिमेंट है वो इनकैप्सुलेट होना चाहिए। सो आई थिंक ये 2-3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमें न्यू प्रोफेशनल्स के लिए, खासतौर पे जो यंग लोग हमें सुन रहे हैं आज, कि वी आर एबल टू understand and underscore the importance of these elements in our future, and that is going to take us a long way forward, and we will be a long race horse rather than a short race horse. तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 एलिमेंट्स, और फिर आखिरी चीज ये कि यू मस्ट ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैं पाकिस्तान में आई वाज प्रैक्टिसिंग इन द लोअर कोर्ट्स, क्योंकि आई स्टार्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान, तो आई एक्सपीरियंस दैट देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु बिकम प्रे टू लॉयर्स इल प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर डिले, नो टाइम डिलीवरी ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटीज, further to that enhancement of the cost। ये कुछ elements ऐसे हैं जिससे क्लाइंट का इंटरेस्ट और क्लाइंट का जो एक ट्रस्ट है एक लॉयर के ऊपर, एक उसके डिफेंडर के ऊपर, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। सो ये हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है एज अ लॉयर टू अंडरस्टैंड कि आई एम द डिफेंडर ऑफ माय क्लाइंट्स राइट्स, आई विल एक्ट इन हिज गुड फेथ and I will ensure that I do not make him prey to all the scenarios and circumstances around. मतलब मैं उसके लिए तारीख पे तारीख लेते जाऊँ इसलिए क्योंकि because I am getting my salary out of his case. That's not what I think the impression should be. It should be the other way around. If the case is getting wrapped up in 3 hearings, let it be. Try to do it in 2 so that your client gets a speedy and effective justice. That should be the mechanism of the lawyer. And I tell you, इसमें आखिरी पॉइंट जो मैं आप अपनी मेरी स्लाइड्स में भी पढ़ लेंगे,
वो ये है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंटेग्रिटी का जो चौथा एलिमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड दैट इज अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस, विच इज आपका क्लाइंट आपके काम से मुतमईन होना चाहिए। You should never guarantee him कि जी मैं आपको आपका केस जितवा के दूंगा। You should guarantee him कि मेरी सर्विसेज या मेरी एफर्ट जो है वो आपको नजर आएंगी, चाहे वो कोर्ट हेयरिंग में हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग में हो, कोई एप्लीकेशन है या रिट है, जो भी आपका व्हाटएवर यू आर प्लीडिंग, बिकॉज आपका पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू योर प्रोफेशन। आपने प्रोफेशन से रन करनी है अपनी प्रैक्टिस। सो इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट in the life of a lawyer and in the professional outlook of a lawyer. So I believe this is the ingredient number one. Isme two key elements which are remembering points is you are a reflection of your profession. How you behave, how you look, how you respond, how you speak, and how you communicate in society. You are the reflection of your profession. The profession will be judged by your actions. So उस situation में हम और and this goes universal for every profession in the world, but we as lawyers are always in the scanner because we are reflecting and we are acting we are doing more than one jobs. And you can see कि lawyer की responsibility मेरे हिसाब से अगर आप analysis करें तो इस वक्त आपकी parliament में तमाम प्रोविंशियल, फेडरल और सेनेट लेजिस्लेचर्स को उठा लें आप पाकिस्तान के, so you would see that more than 50% have law background, have legal degrees. Exactly. So I think exactly इसलिए all the more important हो जाता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबली इंपॉर्टेंट है, पब्लिक आई के अंदर और प्रोफेशनल आई के अंदर. So I request all my listeners and all the viewers today who are watching this and who will be able to see my slides to try to encapsulate and add these ingredients in your professional responsibility, in your professional life, and that can elevate your standard of practice and also elevate your outlook as a professional in the community. You will be earning respect with that. The second element, which is like ingredient number 2, is competence. Now, unfortunately, in Pakistani legal system, once you graduate and you get your license from the Punjab Bar Council, 60% of professionals usually try to go for their own practice because they believe that this is where there's money, there is financial security, and they can they are in the right frame of mind to proceed ahead. Where I think competence is equally important as professionalism, because competence is what you know about the law and how you defend your client or how you communicate with the opposing counsel or with the courts in order for you to have the right the right outcome for your clients. So competence derives practice. Element of competence include relevant knowledge and skills. आपको पता होना चाहिए कि for example you just have exposure of banking laws, civil laws, and lately you've been starting to get a lot of family issues or corporate commercial issues. So आपका वो exposure नहीं है उन चीजों को handle करने का, तो rather risking your competence on your client, you can have other mechanisms by which you can help your client, including such as co-counseling, getting shadowing with a senior counsel who can assist you in development of the skills and relevant knowledge. I'm not saying that refuse the client. I'm saying get into collaboration with the other councils or incorporations where you can experience that knowledge and skill by not putting your client at jeopardy. So don't experience or don't get the relevant knowledge and skills testing on your client. It should come to you naturally through your development as a professional. So competence के ये key elements हैं. So relevant knowledge and skill, judgment of a prudent professional. How will I behave? Will I be able to? मैं for example 15 साल से immigration कर रहा हूँ. Giving you an example. मैं 15 साल से immigration कर रहा हूँ.
और सडनली मेरे पास रिट पिटिशंस या हाई कोर्ट की अपील्स आना शुरू हो जाती हैं क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर, आई विल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू डील विद दीज मैटर्स बिकॉज वो मेरी एरिया ऑफ प्रैक्टिस नहीं है. सो अब मेरे पास आजकल केसेस नहीं है, मैं वो केसेस लेना शुरू कर दूं ताकि मेरा तो रन ऑफ द मिल बढ़े ना. दिस इज नॉट राइट. This is where the professionalism of a lawyer starts to jump in, and it tells him, okay, देखो, you and what happens after that? Let's say you start accepting your cases, and the client gets jeopardized by your inexperience or inability of the law. Then you, having a bad impression in the market, goes out. The word spreads like fire in the woods. Your one bad experience will look bad upon the profession. So इसलिए going back to the same principle जो मैं पहले बात कर रहा था, your experience, your outlook will reflect how your profession is judged. So it is all the more important for a lawyer to gain the relevant knowledge, act professionally, and behave like a senior or a seasoned professional in the society, so that you are the flag carriers of your profession. अच्छा वजाद साहब, मैं इधर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा प्लीज. अच्छा, आप कनाडा में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम, तो आपने पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की, तो आपने कॉम्पिटेंसी की बात की, इंटेग्रिटी की बात की, तो आप किस तरह से देखते हैं कैनेडियन लॉयर की इंटेग्रिटी क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या, अगर उसको कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए पाकिस्तानी लॉयर के साथ, तो वो आप किस तरह से एक एनालिसिस ड्रॉ करेंगे? मैं उसामा, in a nutshell, I'll answer the question, but I'll take this at the end as well because I think it's a very important question that you have raised. A lawyer is only allowed, or a lawyer is only told to go and practice profession once he has attained those relevant knowledge and skills. So many a time, मेरे experience में बहुत दफा ये हुआ है कि बहुत सारे जो fresh graduates होते हैं या fresh licensees होते हैं, they do not go into practice straight away. They will go to do shadowing or in clerkship or internship or आप उसको apprenticeship जो भी नाम देना चाहें, with a senior lawyer for a year or two, train their skills, and then they go into the market. मैं आपको अगर आप कहें practical example दे सकता हूँ पाकिस्तान की जी जरूर सिनेरियो में. आप you would know barrister Raheel Kamran. I happen to have worked with him a little bit, and one of his associates, Mr. Saad Khan, was doing articling. So I liked his idea. Saad was a fresh graduate. He worked with Raheel Khan for 3-4 years, and then he set up his own firm. So वो जो skill experience उसने learn किया, वो उसने अपनी practice में implement कर दिया. इसी तरह बहुत सारे लोग you name it, you know it. एतजाज एहसन साहब के इतने सारे associates हैं, सलमान सफदर साहब के हैं, और बहुत seasoned lawyer जिनके associates हैं, they gain that competency, they become professional, they refine their skills in the first 3-4 years, and then they go into the market independently. So coming back to the second ingredient, last point on that was first was competence, and second is confidentiality. So one of the elements which I have learned here in Canadian legal system is you must not disclose who is your client. That's the key point. I don't have to tell you if I'm a lawyer for this person or not. That's my legal obligation. That's my professional responsibility. In contrast, in our country, it's the other way around. The more you tell who is your client, the more you feel like you are empowered or you're known in the industry, which I think is totally wrong. Because what this does is, let's say I tell you that I have a client, for example, my client is the Prime Minister for a personal matter. Now the confidentiality between me and the Prime Minister and my client is at risk. Breach. Communications that we have is at risk. Because somewhere down the line, someone can wiretape, someone will try to hinge in what is the matter, or maybe my staff member might be able to give some lead in why is this person my client. So that's why I'm saying this is another element of competence that you must remain, you and your client's confidentiality must remain with you, and it's a duty that should run perpetually.
regardless your client survives, he dies, doesn't make a difference. You must never disclose who is your client and what are the communications between you and your client to anyone in the public, except for your staff members. और ये एक बहुत important element है professionalism का, कि आप competence, confidentiality को make sure करते हैं और उन standards को meet करते हैं जिसकी वजह से आपका profession और आपकी जो practice है वो professionally बेहतर तरीके से look upon करती है society के अंदर. I have come to know about certain examples of law firms practicing confidentiality, and I think it's a very good start in Pakistani legal system, and it should proceed ahead with a lot of vehemence, because I think ये बहुत important है to implement, and specifically if you look upon the Bar of England and the other legal systems like Canada or Australia, you would know that confidentiality is the cornerstone of legal practice. Right. ये बड़ा अहम पॉइंट वजाद साहब आपने बताया. पाकिस्तान में लोकल प्रैक्टिस में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. लोगों को ये बताया जाता है ये मेरा क्लाइंट है और अपनी प्रैक्टिस जो है इस तरह से बढ़ाई जाती है. जी हाँ. मैटर ऑफ प्राइड जो है वो बनाया जाता है. जी हाँ, आप बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, और मैंने ये चीज एक्सपीरियंस भी की जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करता था और फिर हाई कोर्ट्स में भी जब मैं वाज वर्किंग. So I experienced this, and I think, और यहाँ आके मैंने इसका रिवर्स जब एक्सपीरियंस किया तो it was a new environment or new learning for me. So I think slowly if we take good points or important elements of refinement of legal practice, so that can help our industry and our legal profession to elevate in standards. अच्छा वजाद साहब, अभी आपने बात की मेंटोर्स की, तो मैं एक मेंटोर्स के वाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि एक मेंटोर जो है या एक सीनियर जो है उसका क्या किरदार होता है और कितना अहम किरदार होता है अपने जूनियर की जो है वो उसका कैरियर बिल्ड करने में और उसकी तरबियत करने में? आई थिंक हंसला, देखिए आपको आपके सफर के अंदर थिंक लाइक दिस, लाइक अ गाइड. आपको अपने सफर के अंदर हमेशा किसी ना किसी मोड़ पे ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वे यू नीड हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोफेशनली और पर्सनली, बिकॉज समटाइम्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. यू विल बी वर्किंग ऑन अ वेरी हाई प्रोफाइल केस जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा, तो you would need a mentor or a guide with whom you can go and discuss your matters and take lead के मुझे इस वक्त stress को manage करने के लिए क्या करना चाहिए. And it's important that that guide should be from your profession, because he will tell you the stress level management practices from within your profession. Not like a cricketer cannot tell you how to manage stress in a legal in a courtroom. And same way the other, vice versa. A courtroom lawyer would not know how to manage stress in a cricket field or a football field. So that's one element where I think personally आपको refine करना है आपका mentor या senior जो आपको जिसके साथ आप run up कर रहे हैं. Secondly, you should always be able to have a person with whom you are able to share and discuss your legal strategies, because there will be a point, because देखें law मुझे भी और आपको उतना ही आना है जितना हमें पता है या जितना हम पढ़ सकते हैं किताब से. It is the strategy which will define the success of your client. So sometimes you may have a better strategy than me, and sometimes I may trump you with my strategy. So therefore it is all the more important कि आपका जो senior और आपका mentor है वो आपको या तो उन strategies को insights को सिखा दे by that time, या आप उससे वो लीड इन लेना शुरू कर दें फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ साइड बाय साइड, ताकि जब कहीं भी आप फंसे या जहां कहीं भी आपको कोई इशू हो तो यू आर एबल टू गेट दैट असिस्टेंस. एंड फाइनली, हाउ यू आर रिफाइंड एज अ प्रोफेशनल is defined by who you communicate or who you have your sittings or your company with. So I think it is very important to have your company with seasoned and senior counsels, because they will tell you how to dissect the law and how to trump your cases in the courtroom, because you're doing litigation specifically in Pakistan. Or if you're doing chamber work, then how you should be communicating with your opposing counsel, how you should be looking at the file,
how to read a file, how to redefine an FIR. So these sorts of things will only come by your professional company, your mentorship, your clerkship with a senior counsel, जिसके साथ आप चलेंगे, जिसके साय में, जो दरख्त किसी के साय में चलता है ना, वो कामयाबी की तरफ जाता है. तो मैं ये हमेशा समझता हूँ कि it is important कि you have a senior with whom you go and talk to without the curtains of any issue or shame or regrets, because that's where you're going to gain your knowledge. और इस प्रोफेशन में आपको हर स्टेप के ऊपर कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर की, आपको अपने अच्छे दोस्त की, आपको अच्छे मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग हॉल. ये 40 साल 50 साल का प्रोफेशन है, ये 5 साल की जॉब या 7 साल की जॉब नहीं है. In your employment, you are still, exactly. You are your own CEO, you are your own director. So when you are your own director, you are your own CEO, then you have a plethora of responsibilities to take care of. So that's why I think mentor plays a very important role in redefining a professional in this in legal industry. Absolutely, yes. अच्छा वजाद साहब, हंसला ने निशानदाही की, मेंटोरशिप की आपने भी बात की. अच्छा, जो पाकिस्तान में सीनियर्स के साथ काम करते हैं तो यंग लॉयर्स का बड़ा इशू है स्टाइपेंड का, यारली जो करियर है उनमें उनको इसका बड़ा इशू आता है, जिसको फाइनेंशियल इशू भी हम कह सकते हैं. तो क्लर्कशिप को अगर इसका आप कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करें कनाडा में और पाकिस्तान में, तो इसको किस तरह से देखेंगे आप? मैंने ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तीनों अपनी अगली इंग्रेडिएंट्स में ये पॉइंट रखा हुआ है. अगर आप उसको हम अभी डाइसेक्ट भी करते हैं तो able to get that, and I will answer this with the 3 ingredients, so I'll wrap it up of that. Right. So the next ingredient which I raise is the conflict of interest. So a lawyer has a fiduciary obligation. What I mean by fiduciary obligation is that he should remain loyal to his client. I have a duty to remain loyal to my client. If I have Osama as my client against a matter with ABC, then tomorrow I should not go and represent ABC against Osama or against a connected person to Osama in the same matter or a separate matter, because I have certain confidentiality जिसके अंदर मैं conflict of interest को raise कर सकता हूँ by my representation to the other side. So हमारे मुल्क में unfortunately conflict of interest को ज़्यादा राय नहीं दी जाती या ज़्यादा strongly इसको देखा नहीं जाता. But I think now the profession should evolve and should try to look at certain elements of conflicts of interest within the legal profession, so that you are able to pan out what are my legal obligations and what are my limitations to represent a client. And I think it is all the more important. It is a starting point of a legal professional to ensure that there is no conflict of interest. And in giving you an example of Canadian legal system, the first thing that a lawyer is obligated to do, that I have learned as a licensing lawyer right now, the first thing that the lawyer is obligated to do after identification and verification of his client is conflicts check. You must do a conflicts check on your client and ensure that you are not having a conflict of interest, personal or professional, with your client or against your client. If you have a conflict, you must not take that client. You should withdraw. You should refuse the file. And if there is a conflict that can develop later, and you can refuse, you can tell your client that I cannot represent you any further. हमारे मुल्क में अगर ये मैं किसी वकील से मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया and you should withdraw, वो मुझे पढ़ जाएंगे कि आप फाइल हमारी वापस करवा रहे हैं. तो ये एक डिफरेंस है जो कि माइंडसेट का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस. And I think we should start thinking towards this. जिस तरह confidentiality और competence की हमने बात की, ये भी एलिमेंट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने प्रोफेशन को एलिवेट करेंगे अगर हम ये चीजें अपने अंदर इन्वॉल्व करना शुरू करें एज अ सोल प्रैक्टिशनर और एज अ practitioner. And when I talk about conflicts and how to deal with the conflicts, it could be a personal conflict as well, that I should not represent my parents or I should not represent my family in a matter because I would have a personal connection, personal emotional attachment to that particular matter, and I may not be able to objectively substantiate the interest of my client in the court.
सो जैसे फायज ईसा साहब वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने एग्जांपल आपने देखी, तो ही केम अप हिमसेल्फ टू डिफेंड एंड अप हिमसेल्फ एज अ लॉयर टू डिफेंड। हालांकि वो केस उनकी वाइफ का भी था, मतलब शी वाज आल्सो अ पार्टी टू द एप्लीकेशन। सो आई थिंक ये चीजें ट्रिकल डाउन इफेक्ट करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू दिस, it has to start from somewhere, either in bureaucracy, either in the legislature, either in the cabinet, either in the legal profession, anywhere you name it. You have to start taking conflicts of interest very seriously, and then you can see how the profession, how your legal system grows, because ये चीजें आपको अब time by time नजर आएगा इसका impact. Ingredient number 4, which is advancement of legal profession, and that is answering your question, Osama, जो आपने किया था. What I'm saying by advancement of legal profession is one must not abuse the client. When I say abuse, I mean you should not charge disproportionate fees, जो कि बहुत prevalent है हमारी society के अंदर, that we think that the client is our cash cow. Exactly. And इससे तो जितना मर्जी we can, you know, it's good that we bill him the maximum. You bill him, but bill him reasonable and fair to what services you offer. If you charge $25,000 for an application, 25,000 rupees for an application, then you should not charge 40,000 rupees for the same application to another client, because he may have a better paying capacity. You should be fair and reasonable. Don't charge disproportionate fee कि मैं 25,000 में एक केस करता हूँ तो मैं अब इसका केस 1 लाख में करूंगा. I think that's unfair. Exactly. And so that's where you should not abuse it, because the client at this point in time when he's coming to you, he is locked in that scenario, और उसके सवालों का जवाब आपके पास और आपके थ्रू कोर्ट से आपने वो जवाब लेना है उसके लिए आसानी करने के लिए. So exactly. वो तो जिस मुश्किल में फंस गया उसने वही करना है जो आप उसको कहेंगे. तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लॉयर बढ़ जाती है, not to abuse the client by charging disproportionate fee. You should charge fair and reasonable fee. Secondly, question from audience. Nigat Rafi, she is asking, what is the fee standard in Canada? Answering to this, fair and reasonable. Whatever you charge, it should be fair and reasonable, and you should be able to justify your fees. For example, I charge $10 for giving a consultation. Giving you an example, I charge $10 for giving a consultation to A person, and when a B person comes to my office, I should not be charging $500 for the same consultation. I can charge 10, I can charge 20, I can charge 70, I can charge 100, but I should not charge 500. If I am charging 500, then I should be able to justify the amount of fee that I'm charging by the legal services that I'm offering. So reasonable and fair and justifiable standard is the fee standard in Canada. Right. The element which we were discussing, or usme second point which I want to share is, you must not abuse the client. When I'm saying abuse the client, by raising undue expectations. That's another pitfall that we have in our legal profession, specific to Pakistan and globally. This works globally. Guaranteeing the outcomes to your client is not your responsibility. मतलब आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि मैं इस बंदे को छुड़ा के ले आऊंगा? भाई, यू कैन गारंटी कि मैं अपनी एफर्ट्स करके बंदे के लिए रास्ता निकलवा सकता हूँ या मैं रास्ता निकाल सकता हूँ बाय माय एफर्ट. But you cannot say कि मैं, you know, he'll get the bail or he'll get the approval. That should not be the case. And you should always manage and meet expectations of your client at the initial stage. आप initially उसको सही पिक्चर बताएं कि जी ये आपका मैटर है, यहाँ हमें लगता है हम केस बना सकते हैं और इसको इस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, लीगल पॉइंट्स के ऊपर हम इसके ऊपर केस बिल्डअप कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसके ऊपर आसानी ले सकते हैं. This is one right way of managing your client's expectation. But on the contrary, saying कि जी ये केस टूट सकता है इस बुनियाद के ऊपर और मैं तो आप देखिएगा यकीनन बंदा आपका छुड़ा के लेके आऊंगा, this is wrong.
बिकॉज आपका क्लाइंट आपसे वो एक्सपेक्टेशन अब बिल्ड करना शुरू हो गया, मेरे वकील तो मेरा बंदा लेके आ रहा है, छुड़ा के ला रहा है बंदा मेरा, या मेरा केस निकाल के ला रहा है, ये जो फाइन मुझे लगा है तो खत्म करवा के ला रहा है. That's wrong, because what happens is when you are not able to fulfill that expectation, then there is a black spot and a question mark coming onto yourself, your integrity, and the integrity of the profession. In the public eye, your profession and the administration of justice is looked upon with a bad name. So I think it is very important that you try and consider building expectations that are realistic and never guarantee results to your client. Right. के अंदर उसामा आप वाला जो पॉइंट था वो यही, to participate in mentorship, internship, counseling, co-counseling, volunteer programs, law clinic programs, giving out lecture series to new professionals या existing professionals just to enhance their confidence in the profession. And when I say जो मुझे अच्छा एक point लगता है वो co-counseling का है. For example, let's say you are a criminal lawyer in Pakistan and you get a case that is about banking law or a banking criminal. Right. You may not have the full expertise of a banking banking criminal fraud, but you may have criminal fraud expertise. So in this case, you can collaborate with another lawyer and jointly work as a co-counsel to that matter who has expertise. So उसमें दूसरा लॉयर भी आपके साथ एंगेज हो जाता है, उसको भी एक एक्सपोजर मिल जाता है पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, और आपकी भी एक्सपर्टीज एनहांस हो जाती है. So this is something new which can be incorporated. Just like think like a firm. So at the back end, you are co-counseling with another professional like a firm, and you are strategizing to deal with that matter. Either you can be the lead counsel or that person can be the lead counsel. But there are two minds going into that particular matter, which are expertise of both professionals. So that co-counseling can build up your professionalism and can also your brace. So इससे आपका एक तो confidence level बढ़ेगा, दूसरा client will feel empowered कि यार मेरा matter properly देखा जा रहा है. It is not one man show. Both people have the particular expertise in their fields. And I think that when you go and represent yourself, your client in the court, and represent your own developments in the court, you will be also, there is high probability that you will gain success in the court as well. So I think advanced सर आपने जी को काउंसल की बात की सर, ये मोटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट होता है काउंसल, को काउंसल और रिसर्चर, तो जिसमें उस तरह से कोलैबोरेटिव वर्क किया जाता है मूड्स के अंदर, तो उस तरह का मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं कि उस तरह मिलके जो है स्पेशलिटीज को कंबाइन करके और चला जाए. Precisely, exactly on my point. और वही कॉन्सेप्ट है कि both और 2, 3, 4 जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, they combine their resources to deal with the legal anomaly at hand and answer it to the court. Exactly. And once you are reflecting your professionalism in that by your research, by your your case coordination, तो आप देखेंगे कि the opposite side will automatically feel less empowered on the matter, because you will have that research and skill of 5 people or 4 people who are counseling to solve this matter. So that's another thing. The other one which you already know commonly implemented in our society is mentorship and training. But the downside of internship and mentorship is that the new professional अपनी lack of प्रोफेशनलिज्म या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कि वो न्यू एंट्रेंट होता है सोसाइटी के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, तो ही इज नॉट अ प्रॉपर डिफेंडर ऑफ हिज ओन राइट्स. एंड आई थिंक इन दिस सिचुएशन द रिस्पांसिबिलिटी ऑन द सीनियर काउंसिल और द मेंटोरिंग काउंसिल increases 3-4 folds, because number one, he must make sure that he is not abusing his staff or the junior counsel. That staff or the junior counsel is given the opportunity to learn. ये नहीं कि उससे वो फोटोकॉपियां कराता रहे या उससे कोर्ट फीसें भरवाता रहे या उससे फाइलें फिल करवाता रहे. करवाएं, ये इम्पोर्टेंट है, मगर साथ के साथ उसको पूरा पैकेज दें कि आप फाइल डीकोड करके मेरे पास लेके आए, इसको पढ़ें, इसके अंदर से पॉइंट्स निकालें, उसको अपॉर्चुनिटी दें टू ड्राफ्ट अ प्लेंट, टू ड्राफ्ट अ रिट पिटिशन,
ताकि जो काउंसिल है, जो जूनियर काउंसिल है, he feels कि he is gaining that experience which he may use in his profession. The senior counsel should never treat the junior counsel as a threat, should always treat the junior counsel like a child. क्योंकि ये बच्चा जिसको आप ट्रेन और ग्रूम कर रहे हैं, ये कल जाके आप ही का जूनियर होगा सारी उम्र. ही विल बी बिहेविंग लाइक योर जूनियर. उसने आपके पास आना है अपने किसी भी मसले के लिए, किसी भी इशू के लिए. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है. दो बातें मैंने इसमें आपसे की. एक तो ये कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दूसरा ये कि उसके राइट्स को डिफेंड करना सीनियर काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जूनियर काउंसिल को इस स्टेज के ऊपर नहीं पता कि प्रोफेशन के पेचोखंद क्या है, कि उसके क्या इश्यूज हैं, क्या उसकी pitfalls हैं प्रोफेशन के, and how to deal and tackle those tricky situations. And number three, which is most important, is that there should be equality and equity in the payout of that junior counsel. Don't treat the junior counsel like a clerk. Junior counsel should be given the respect of a junior counsel in his salary, in his wages, and the exposure that he's getting to help you in your firm or your legal practice. So equity and quality of his wages is most important for the satisfaction of the junior counsel, that he's learning something and he's also contributing to your firm and your practice. So advancement of profession के हिसाब से जो मैंने चौथी ingredient अभी आपसे share की है, I think it's very important. And I think this particular ingredient gives a lot of responsibility on senior counsel to take care and nurture the junior counsel with patience, with training, with wages, and with all sorts of exposure to learn and proceed ahead. And finally, my last ingredient, which I call the never list, which I say the never list, that this is a no, never do this, is number one, harass your colleagues, your clients, judges, staff members, or public. When I say harass, I mean, because I am a lawyer and I am sitting at a position of privilege and responsibility. मैं एक ऐसी position पे बैठा हुआ हूँ society में by virtue of my license as a lawyer, that whatever I will do will reflect upon the profession and will reflect upon the society, will reflect upon public. Exactly. So my attitude, my behavior, my tolerance level should be optimum, and it should not be of a level where I am harassing my staff to do a job. That harassment can be emotional harassment, can be financial harassment, can be sexual harassment. आजकल ये बड़ा it can be based on gender. ये बहुत ही common issue है जो कि कुछ पहले तो सटल तरीके से एड्रेस हो रहा था, मगर now I believe it is very much in the public, and I think when it is in the public, the awareness increases. You are also under the scanner as a lawyer, so if there is anything that you can do to train yourself by dealing with that harassment, for example, I'll give you an example. Passing a comment with your, let's say you're standing with your 4 juniors and you pass a comment on the credibility of a judge who is listening or who is hearing your case the next morning, that can amount to harassment, because what you're doing is that in your junior counsel's mind, you are inculcating a thought process that, this person is not able or apt enough to deal with our matter, or his credibility is automatically questioned. So this way, you are harassing the profession by commenting on the judge, because he cannot respond to you by virtue of his position as a judge. He will only respond to your case. Exactly. So we have to start building these trainings and habits in our practice from day one as lawyers of how to deal with harassment. Firstly, we must give protective environment to our staff, to fellow colleagues, whoever we communicate or deal with. If we don't like the face of the other colleague, we do not need to pass a comment on that person. We need to look at our file and focus our attention on the file, because that's where the matter is right now. In our personal life, we can deal with that later on. 90% of the times हमारे profession के अंदर यही होता है कि you start communicating and getting a personal grudge with the opposing counsel or the judge or the staff member,
and that amounts to some sort of harassment. The other person feels uncomfortable, and they start to take their way out. And eventually, who is jeopardized? The client. Because sometimes you financially harass the client that if you don't pay 25,000 rupees next morning in my bank, I am not going to the hearing. This is also harassment. You have done, Exactly. He's paid the fee. Maybe he's not able to pay in a day or two. He may pay after 10 days. Make arrangements and be flexible in your professional environment so that you are able to curtail with all these sorts of demons, which I call them demons, harassment. And the second one is discrimination. It can be based on age. You may treat a 17-year-old client differently and a 60-year-old client differently. That's wrong. You must deal with all clients of all ages at the same wavelength as a professional, because for you, a 17-year-old is also a client and a 60-year-old is also a client. In our society, men and women are treated differently, which is wrong. You should not discriminate based on gender. You should treat every individual equally, because for you, equality and equity is as a professional. So, and then I say discrimination on religion, social status, who has a better paying capacity, who is a poor client, who is a well paid off client. आप मुझे सुन Yeah, I can hear you. Ji, Usama, I can hear you. जी वजह साहब कंटिन्यू करें. Okay, so discrimination based on disability, that you may have a client who has a disability. You should not be discriminating with someone who is, by the grace of God, proper human being without any disability, and the other person has disability. There should be no discrimination on that. And then diminished capacity. In our profession, we have to deal with clients who have diminished capacity, who do not have the capacity of a reasonable individual, reasonable, prudent individual. You must have learned about this test in your legal profession, in your legal studies. So we have to deal with clients, and they are also our clients, like those who are reasonable, prudent individuals. So we as professionals must never discriminate of who to offer services, how to offer services, and how much the level of services we will offer to that particular individual. I think along with harassment, discrimination goes hand in hand, because when you do discrimination, some point in time you will also do harassment in your professional outlook. And finally, which is my last point to all these ingredients, is abuse. Osama already mentioned this. I've already addressed this. But when I say abuse at this point in time, which is a never list abuse, I mean your associates, your staff, your clients should never be abused by your actions and your judgment. आपने ख्याल रखना है, आपने केयर टेक करनी है उन तमाम लोगों की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, by way of your relationship as a lawyer and client, by way of your relationship employer and employee, by way of your relationship as a judge and a lawyer, and by way of your relationship as a legislator and a public. And when specifically when you are a politician, or when you are a legislator, or when you are in a position of authority and you're also a lawyer, you are always in the public eye. So your comments, your outlook, your behavior, your politeness, your calmness should be paramount. आपको पहले ये पता होना चाहिए कि I am a lawyer. With this reflection of my profession, I have been looked upon by the public. And if I am calm, if I am polite, if I am able to listen to what others are saying, my profession will be looked upon with respect. And I'll conclude with one small comment, and that is, in our profession, in our culture, in our society, in Pakistan specifically, we have now started to demand respect as lawyers. When I was learning law, when I was learning practice in Pakistan, that was not the case. We would be told that you have to earn respect by giving respect. And unfortunately, now the trend is demanding respect. Very disturbing incidents and images I have come to know and I've observed over the past years about beating up of judges, lawyers thrashing each other,
getting physical scuffles and fights within the legal profession and with the investigating authorities. This all does not earn respect. All of this is sort of a scuffle, tension. This creates tension between the legal profession and public, and this eliminates or this reduces the respect and level of confidence by public on lawyers. So my urge and my request to all new professionals, to all those listening today, and to all those who may be listening later on, is if you're a lawyer, please earn respect by giving respect. Listen to your client. Don't talk at your client. And finally, for the public, those who are not lawyers and those who are public listening to this broadcast, I want you to also please give respect to the legal professional, because by the grace of his training, by the grace of his education, the lawyer has been put in a position where he is also he's the defender of your rights. So if you trust and if you give him that particular pedestal in your matter, he will never let you down by professionally underdoing his task. So with that, I'll conclude and we can take questions. Right. वजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इंग्रेडिएंट्स को और प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को। तो सर, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इस डाउनग्रेडेशन की? क्या बार एसोसिएशंस हैं, या हमारे लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, या इस तरह के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती यंग वकीलों की? कौन जिम्मेदार है इस डाउनग्रेडेशन का? जो लीगल परसेप्शन है वो बड़ा जो एक पर्सोना जो है बड़ा बुरा सा बन चुका है लोगों के सामने। अगर आप उसामा ढूंढना शुरू हो जाएंगे ना कि कौन जिम्मेदार है इसका, तो आप कभी भी सही जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे। यू शुड फोकस एट व्हाट यू हैव एट हैंड। मैं खुद जिम्मेदार हूं इसका, कहीं ना कहीं मेरा अपना कसूर है। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं I as a lawyer have failed to contribute and change the environment and attitude of public in my scenario. Somewhere I am responsible. और जो आपने बात की बार एसोसिएशंस की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, स्कूल्स की, लॉयर्स की अपनी, I think we all must sit together and do a social contract and self analysis कि हम लोगों ने क्या और किस तरह contribute किया है, या हम किस तरह contribute कर रहे हैं और इसको बेहतर करना है। Making the legal profession or giving out degrees by institutions and making it a commercial activity will not lead you towards upgradation of the profession. And that is, I'm sorry to say, that is not the responsibility of the Bar Council. क्योंकि बार काउंसिल का काम बाद में आता है। पहले आप लॉयर को उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोसेस से निकाल रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट को उस ट्रेनिंग प्रोसेस से निकाल रहे हैं जो स्कूल से निकल के आ रहा है, जो यूनिवर्सिटी से होके आ रहा है। वहां पे यूनिवर्सिटी का रोल है। बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी के साथ उस स्टूडेंट की, उस वकील की अपनी जिम्मेदारी है कि वो एक सीनियर काउंसिल के साथ उस वक्त से काम करना शुरू करे। बिकॉज आई टेल यू माई एग्जाम्पल, मैंने अभी आई वॉज इन year 1 in my law. I did my A levels and I did my year 1 in law, and within the first 3 months, matlab I started school in college in August. September, late September, I started working with Barrister Salman Sir, that he took me on as his mentor. So as a student, he was my mentor. So ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है as a student कि मैं I attach myself with a senior counsel, try to learn the tricks of the trade. Exactly. And when I am ready, when I am licensed, then the Bar Council should regulate me, should check my professional activities, should make sure कि मेरी रेगुलेशन प्रॉपर है, मैं काम सही कर रहा हूँ, मैं ऑडिटेड हूँ, मैं किसी तरह से प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं किसी इल प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और फिर जब मैं पॉलिटिशियन बनता हूँ या मैं लेजिस्लेशन में जाता हूँ, तो वहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल बढ़ जाती है, बिकॉज अब पब्लिक का प्रेशर भी मेरे ऊपर आ गया है। तो आई थिंक ये if pinpointing one particular section is responsible, no, everyone is responsible. We as human beings are responsible, then our colleges are responsible, then lawyers are responsible, then bar councils are responsible, because ये हमारी collective responsibility है to upgrade the profession. ये किसी एक ने जिम्मा नहीं उठाया हुआ इसका। और अगर आप किसी एक को आप पिन पॉइंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बैकलैश आएगा आपको। और ये चीज हर जगह, हर कम्युनिटी और हर प्रैक्टिस में है।
डॉक्टर्स को देख लें, लॉयर्स को देख लें, अकाउंटेंट्स को देख लें, बिजनेस प्रोफेशनल्स को देख लें, यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल कम्युनिटी, होल सिनेरियो। राइट, राइट। अच्छा उजाज साहब, मैं आपसे, अभी आपने बात की एक्सपेक्टेशन की और जो गारंटीज हैं जो आमतौर पे लॉयर्स देते हैं उसके वाले से आपने बात की। जो मैंने भी पर्टिकुलरली नोटिस किया कि जब एक आमतौर पर जब वकला के पास कोई क्लाइंट आता है तो वो उसको बगैर उसके केस को जांचे, बगैर उसको पढ़े जो है वो उसका केस जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो उस केस को डील करते हैं। लेकिन वो उधर जो है उसको ये नहीं बताते उस क्लाइंट को उस केस के लेने से पहले कि आया उसका केस जो है वो कमज़ोर है या नहीं, आया वो शख्स जो है वो हक पर है या नहीं, आया वो केस जीतेगा या जीत सकता है या हार सकता है। ये सारी चीज़ें तो आपको लगता है कि ये भी एक वकील की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को ये बताए केस लेने से पहले कि उसका जो केस है उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंजला, और अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। आई थिंक एंड आई थिंक दैट हैज बीन माय प्रैक्टिस। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, जब भी मेरे पास कोई केस आता है, बिफोर आई एक्सेप्ट दैट केस, आई टेक द फाइल टू स्टडी एंड रिव्यू, and then we have a meeting with the client and discuss with them what are the drawbacks in this particular scenario and what is the strong points of our case, and we take things forward from there and building our case, ताकि जो की पॉइंट्स आपने अपने हिसाब से केस में निकाले प्रॉब्ली वो गलत होंगे। क्लाइंट में गिव यू न्यू इन्फॉर्मेशन जिससे आप समझते हैं कि केस को यहाँ ब्रेक किया जा सकता है। हर केस स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता कि जहाँ आपको टाइम बार हो गया या लॉ की गलत इंटरप्रिटेशन हो गई या गलत सजा मिल गई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में। बहुत सारी चीजें नई आती हैं, नई सिचुएशंस अराइज होती हैं जो आप जाके अपील में या केस को स्टार्ट करते हुए आप तोड़ सकते हैं, उसको केस को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ फाइल को पहले पढ़ना, फाइल को डाइसेक्ट करना, क्लाइंट के साथ बैठ के फाइल को डिस्कस करना और फिर अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करना कि आया मैं इस केस को लेने के लिए कॉम्पिटेंट हूं भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वही बात जो हम पहले कह रहे थे, इंग्रेडिएंट नंबर 2, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। केस आपके पास आ गया क्रिमिनल लॉ का, प्रैक्टिस आप सारी बैंकिंग करते हो और अब आप क्रिमिनल का केस लेके आ रहे हो, समझते हो कि मैं केस चला सकता हूँ क्योंकि आगे जाके इसमें मुझे लगता है अच्छे पैसे। दिस इज नॉट राइट। आपको क्लाइंट को उस वक्त बताना है कि देखो मेरी प्रैक्टिस बैंकिंग है, मैं तुम्हारा केस ले रहा हूँ नोइंग कि मेरे पास ये एबिलिटी है इसको टैकल करने की। आप जब तक फाइल को पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने आप को कैसे जज करेंगे कि एम आई कॉम्पिटेंट टू हैंडल दिस मैटर और नॉट। जब तक आप फाइल को डाइसेक्ट नहीं करेंगे आप क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे। कल आपने जज को जाके अपेयर होना है सामने, आपने फाइल पढ़ी नहीं होगी, जज को आप क्या बताएंगे कि इसमें क्या केस कहाँ से बनता है, कहाँ से केस टूटता है। सो आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इसकी बहुत कमी है, फुकदान है इस बात का हमारी लीगल प्रैक्टिस के अंदर कि वी डू नॉट स्टडी द फाइल। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर रीडिंग की हैबिट खत्म हो गई है। वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग। हम किताबें लाद के अपने ऊपर चलते जा रहे हैं समझ के कि हमें पता लग गया या हमें इंफॉर्मेशन सारी है, गूगल बाबा हमें हेल्प कर देगा। दैट्स नॉट राइट। लीगल प्रोफेशन के अंदर knowing your case on your tips, the old saying of knowing the case on your tips will win you the case in the court. Right. अच्छा उजाद साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। If a client confesses his crime to you, how do the ethics of your profession define your actions? What you strive to protect him, lessen his punishment, or report him to the authorities? Of course, reporting to the authorities is not the right answer because then you are not reflecting good on your client. आप client तो आपके पास आई, आपको जो communication between you and your client हो रही है, that is privileged communication. That should not go out to anywhere. Confidentiality. Authority, it should not be disclosed anywhere. But yes, the professional responsibility specific to Canadian standards, I'm assuming the same should apply to Pakistan, is that you should look for a lesser sentence. You should never have a defense of alibi that I did not do it. When a confession statement is made to you, you can accept. Yeah, you must make sure that the confession is voluntary and with consent of the client. And when the client knows and you have advised him of the downsides of this confession, then you can go ahead and discuss lesser punishment with the authorities or with the prosecution or with the court in your submissions to the court or the prosecution. Right.
उसामा, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, उसके बाद हम प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे। जी, मैं इधर ऐड करना चाह रहा था कि सर यहाँ किया भी होता है तो सेहत जुर्म से इनकार कर दिया जाता है और मेलाफाइड विटनेसेस लेके आए जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है इसको बचाने के लिए। कन्फेशन तो सर इधर बड़ी दूर की बात है मुजाज साहब। मगर उसामा, आई थिंक इट शुड स्टार्ट एट सम पॉइंट, और आज हम जो बात कर रहे हैं शायद यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी तरफ हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम सोचेंगे तो कल हम उसके ऊपर कुछ एक्शन कर भी सकते हैं। आज अगर हम कदम उठाएंगे, अगर आज हम किसी चीज की तरफ अपना पहला कदम उठाएंगे तो कल शायद वो नॉर्म बन जाए सोसाइटी के अंदर। और ये कम्युनिटीज और सोसाइटीज और कंट्रीज और नेशंस ऐसे बिल्ड होती हैं। देयर इज अ थॉट, there is reflection, and then there is slow but gradual action on that, and you would see कि for example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपने एक इंफॉर्मेशन सेल शायद बनाया, आई थिंक इट्स कॉल्ड, इसमें कमिश्नर लगाया उन्होंने, कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, where you can access the information of state owned enterprises, their costing and everything. So that is an action which has been taken based on accountability and openness, reflection. So I think Article 19 of the Constitution, right? I think. जी, if I am not wrong. Exactly, access to information and privacy. तो ये की बेसिस पे है, और अगर हम आज देख रहे हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है और एक स्टेप आगे गवर्नमेंट ने लिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट्स की डेवलपमेंट में, लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में भी आप देखेंगे रिफाइनमेंट आएगी। आपकी पार्लियामेंट मजबूत होगी, आपके लेजिस्लेटर्स मजबूत होंगे, आपके लेजिस्लेशन के अंदर वो लोग जाएंगे जिनको लॉ की अवेयरनेस होगी, जो कि सोशल और लीगल इश्यूज को जांचना समझना जानते होंगे। तो वही आपकी सीआरपीसीज, वही आपकी सीपीसीज, वही आपके बैंकिंग ऑर्डिनेंसेस, वही आपके टैक्स मैनुअल्स को चेंज करवा सकेंगे, क्योंकि लेजिस्लेशन आपकी पार्लियामेंट से चेंजेस आपकी पार्लियामेंट से होनी। तो ये थॉट, ये रिफ्लेक्शन, ये डिस्कशन, आप लोग अपनी लीगल स्कूल, आपके जो भी आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इन चीजों की डिस्कशन करें, मूव्स में इन चीजों को लेके आए। And I think maybe 5 years down the lane we may have a different sort of a change in our ethical and legal obligations. So I think ये चीजें over the period of time, but positively आगे आएंगी और आना चाहिए। Right. Thank you very much, Fajaz. Here we come to the end of the session. फजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और नाजरीन, हमारे आज का इस सेशन का यहीं पर इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच।